Okay, so we will continue with our discussion. In the last class, we were trying to understand the basics of marketing, and gradually we were trying to move towards the concept of the Islamic orientation of marketing. We discussed the concept of needs, wants, and demand, and basically, marketing management is all about managing the demand. How do you manage it? How do you make products which are capable of satisfying the needs of the customers, and how to make them, you know, more and more desirable, how to make them more and more affordable, so that more and more consumers would want those products, and rather not just want, rather demand them, because if you make them affordable, so they will also be able to, pay for them. And we were also talking about the concept of social marketing and green marketing, how these concepts are gaining currency in the present times. Are we together, Nidal? Can you hear me? Yes, sir. Good. So let me pose this question to Aditya. Aditya, what is the need for green marketing? Sir, in sustainable development, Okay, because in today's world, there is a constant rise in the population as well as the needs are increasing. So we need to okay, concentrate on more on sustainable development and switch our current goals to more greener side for the betterment of the okay, human. But okay. So you have a very important point, that is sustainability. Anybody else who wants to add to what Aditya has said? Yes. My question is why there is a need for green marketing practices? Why people are gradually switching over to green products or organic products? Why the marketers are, kind of forced into, making green marketing as a choice? क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है चलने दें. Why there's a need for green fuels? Why there's a need Scarcity for of organic resources. products? Yes, Scarcity of resources. very good, Abdul Ahad. We have limited resources, very true. So if you have to make your business sustainable, if you have to carry it on for a longer period of time, naturally you need to be, you have to focus on practices which are long lasting. Yes. Any other opinion? What else? Why we are focusing on the green marketing practices? So nowadays, we are observing a trend among the youth that they're going green and they're advocating going vegan and going green. So to leverage this trend setting, many of the companies are also introducing Okay. products and services that are green and sustainable Okay. in nature. Okay. Acha, you're talking about going vegan, or if I say the, you know, the trend for the consumption of organic products, organic vegetables and fruits, Yes, organic, yes. fertilizers, organic cosmetics, makeup, and other things. Why there's a need for all this?
So people are more health conscious nowadays. Good, good. Anybody else? Nafis, you want to say something? The demand for the authentic product is increasing. Okay, okay. Obama said it's about being cost effective or cost effectiveness. Anyways, I mean, you all of you have a point. Hamza, you want to say something? Afra? So maybe the greener people are opting for the greener revolution because of the fact that this is more environmental friendly. Okay, So okay. people are aware So, about the nature. People are more aware about the nature. They want to care more about the nature. So that is why they okay, are good. ready to spend on green products. Okay, good. So, what we have seen actually, a very important thing is that there's a greater awareness for the environment. You have limited resources or scarce resources. People are getting aware about the health. Now, let me put it in a different way. If you just, go back one generation or two generations back, if I talk about my grandfather, he lived in his entire life of 87 years in the village. He never went to school. He was a farmer. Till his last breath, he never had to take any medication. He was walking on his feet, no complications like hypertension or diabetes, no complications like arthritis, right? Leading a very simple life. And since he never went to school, there was no awareness as such about health or environment. Though he was a farmer, he was doing his agriculture. So, actually, the reason you have every right to agree or to disagree that over the years we have fed our industries with greed. लालची हो गए लोग, समझ रहे हैं आप बात को? लोभ जो है ना, लोभ या लालच, ये खतरनाक चीज है. यू गेटिंग मी? एम आई ऑडिबल? क्या आप समझ पा Yes, रहे sir. हैं जो मैं बात Yes, कह sir. रहा हूँ? है ना? अब आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो यू हैव मोर माउथ्स टू फीड. वेरी ट्रू. तो प्रोडक्शन कहाँ से आएगा? चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, चाहे वो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो और तरह का, चाहे गोश्त हो, सब्जी हो, जो भी चीज़ें हैं, नो डाउट देयर इज अ बिग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. तो उसके लिए द बिजनेसेस adopted both fair and unfair means. They were using chemicals and fertilizers beyond the recommended levels, which was turning out to be very, very hazardous for all of us. जो प्रोडक्शन है, it multiplied
It grew manifold, but at the same time, what we were eating in the form of fruits and vegetables and other produce, we were consuming poison. We still are consuming poison. इफ यू टॉक अबाउट, अब आप देखिए वैसे एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे, लोकल लेवल पे देखिए, आपके घर में दूध देने वाला आता है, वो सारे जमाने के भगवानों की कसम खा लेता है और ये कहता है बिल्कुल पक्का प्योर दूध है, और उसमें दूध वाली कोई बात नहीं होती। आज के लोग जो समझदार हैं वो कहते हैं कि अगर किसी ने दूध में पानी मिलाया है तो उसने कोई गलती नहीं करी, मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन अगर दूध में उसने फेविकॉल मिला दिया गाढ़ा करने के लिए, और और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर या यूरिया मिला दिया, तो आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपकी किडनीज फेल हो रही हैं। आप दूध पी रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं दूध तो रोज पीता हूँ, ताकत नहीं आ रही और कमजोरी महसूस हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू थिंक अबाउट इट। आई एम Yes, गिविंग sir. यू अ मोर, Absolutely a relatable. different kind of a perspective, a human perspective। आप चाहें, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री की बात करें, जो ये चिकन आज के ज़माने में खा रहे हैं, जो ब्रॉयलर है, इफ़ यू टॉक टू डॉक्टर्स, वो डॉक्टर कहते हैं कि ये जहर है ये। क्यों? छोटा सा चूजा जो है 10 दिन 15 दिन में बड़ा पूरा वो बन जाता है ब्रॉयलर, विच कैन बी पुट ऑन सेल। सो आप उसका गोश्त खा लीजिए, लेकिन क्या हो रहा है, उसका जो फीड है, उसमें जो दवाएं हैं, उसमें तरह तरह के स्टेरॉइड्स हैं। तो जो चीज़ आप खाएंगे, यू आर व्हाट यू ईट। आप जो चीज़ खाएंगे, जिस तरह का, चाहे वो सब्जी खाएं, चाहे फल खाएं, चाहे गोश्त खाएं, या दूध पिएं, या जूस पिएं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि उसका सेहत पे बहुत गलत असर है। एक तो कंज्यूमर पे असर गलत है, दूसरा एनवायरनमेंट पे भी गलत असर है। आप देखिए टुडे, इन द नेम ऑफ कन्वीनियंस, एंड वी आर ऑल अ पार्टी टू इट, प्लास्टिक का यूज इतना बढ़ गया है। हर आदमी, जहां आप कोई छोटी सी पार्टी हो, शादी हो, कुछ हो, अरे यार प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक की कटोरियां, प्लास्टिक के दोने, है ना, क्योंकि आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट है। गए, एक फोन किया, आपके घर पे सब चीजें आ गई, है ना, ना धोने का झंझट, ना गिनने का झंझट, है ना। तो आदमी सोचता है भाई ये बहुत आसान है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, प्लास्टिक की है, जूस है वो प्लास्टिक में, सारे प्रोडक्ट्स प्लास्टिक में, बिस्किट्स की पैकिंग है वो प्लास्टिक में, हर चीज, चिप्स हैं, जो भी चीजें हैं, आपने खाया फेंक दिया उठा के, डस्टबिन में डाल दिया, बहुत एहसान किया। लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल ही नहीं है, वो नालियों में पड़ा हुआ है, जम रहा है। वो जहाँ पे अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया कि एक बड़ा सा जो है कंपोस्ट पिट बनाया, उसमें डाल दिया, ढक दिया, पर वो वहाँ उस सॉइल की क्वालिटी को खराब कर रहा है। वो खत्म नहीं होगा वहां से, बस दबा हुआ है। अगर वो किसी का प्लॉट है, जिस दिन वो अपने प्लॉट को के पे मकान बनाएगा, वो वहां से हट जाएगा। चाहे आप मोबाइल की बात करें, सेल फोन, इसका इतना बड़ा वेस्ट है। इट इज सच अ बिग बर्डन ऑन दिस एनवायरनमेंट। सिमिलरली, कुछ एग्जांपल्स आप लोग भी दीजिए। सर यस। मैंने निदान और उमामा ने जो हमारा सेकंड सेम का था, एक सब्जेक्ट होता था जी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अब भी है। तो सर उसमें हमारा जो स्टार्टअप था, हमारा यही था कि जो जी। प्लास्टिक जी। वेस्ट होता है, कि हम उसको कलेक्ट करके, हम जी। उसको, एक जो ब्रिक्स आती है ना, फ्लोर टाइल्स आपने देखी होंगी, जो इंटरलॉकिंग टाइल्स होती हैं, हम उसमें कन्वर्ट कर रहे थे। तो हमने देखा बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं इनके लिए, कि जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं।
जो प्लास्टिक्स को कम कर रहे हैं, बिकॉज इट टेक्स मोर देन 80 years टू प्लास्टिक जो नॉर्मल होती है सबसे लोएस्ट वाली उसको डिग्रेड होने में, एंड वी कैन यूज इट। और आजकल उसकी रोड्स भी बन रही है प्लास्टिक की, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रिफर्बिशिंग। You're talking about recycling. You're talking about recycling or upcycling, right? What I was talking about is that the kind of burden that we have created on the environment because of the use of the plastics, the kind of burden that we have created on our health because of the use of pesticides and fertilizers, which are ultimately finding its way into our systems. And that is perhaps one of the reasons of the widespread occurrences of cancer, renal failure, failure of the liver, and other diseases, the diseases which were previously unheard of. So, gradually, some of the people who are, I would say, who have a calling from their conscience, उनकी अंतरात्मा थोड़ी सी जागी है, तो वो लोग जो हैं इस बारे में सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को भी नुकसान ना हो. And perhaps that is the reason why there is a need for green marketing. There's a need for green products. There's a need for organic products, fruits, vegetables, meat, poultry, cosmetics, But sir, the most of the people can't able to afford such for products because they are expensive. art. Yes, they are expensive, definitely. They are expensive because it's still, there's a lot of time before they achieve the economies of scale. We are, we as consumers, we are more price conscious than being health conscious. आज भी हम कहीं ऐसी जगह जाएं, if we compare the price, so we'll go for a product which is price less. हो सकता है कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ग्रीन इंग्रेडिएंट्स हों, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हों, लेकिन डेफिनेटली इट विल कम एट अ प्राइस. वेरी ट्रू, it will be expensive. So you have to make a choice between the money that you have to pay for the product and the health, your personal health, the health of your family, the health of the society, the health of the total environment. So obviously, we all as consumers, both individually as well as collectively, we have to make a choice. Yes, Aisha, what do you have to say in this? Yes, so we have to be more responsible citizens and inhabitants of this planet. Okay. So these are some of the reasons. Obviously, there are many more reasons which are fueling or which are, kind of creating an environment which is conducive for the growth of green products or green marketing practices, whether in terms of product itself, in terms of price, in terms of green promotions, distribution. So there are so many things. Similarly, there is a need for more ethical marketing.
Unfortunately, till recently and even now, for most of the companies, the guiding principle remains the profit. उनका यही कहना है कि भाई अपना प्रॉफिट बनना चाहिए और माल बिकना चाहिए। ये बिल्कुल मैं बिल्कुल ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मार्केट में इस्तेमाल होती है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने शार्क टैंक का प्रोग्राम देखा है? सर देखा हुआ है। Yes, sir. यस सर। आपने देखा? ठीक है। तो शार्क टैंक में जो शार्क्स बैठे रहते हैं, उसमें कोई आईआईटी का पढ़ा हुआ है, कोई आईएम्स का पढ़ा हुआ है ना, कोई यूएस से करे हुए है एमबीए। लेकिन जब वो जबान बोलते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई धंधा बना लोगे कि नहीं बना लोगे, कितना धंधा कर लोगे, ये बात करते हैं, है ना। तो जबान यही इस्तेमाल होती है एक्चुअली मार्केट में। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द सेम जार्गन। कोई कंज्यूमर के बारे में नहीं बात करता, कोई ये नहीं कहता भाई ये जो हम सामान बेच रहे हैं इससे कंज्यूमर को क्या फायदा होगा। अब आप एक सोचिए, वैसे ही मैं एक बात कह रहा हूं, आप जाइए मार्केट से, एक आपको शहद लेना है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बाय हनी, सो यू कैन गेट हनी जो 100 रुपए किलो का भी मिल जाएगा, 150 रुपए किलो का भी मिल जाएगा, 250 300 का भी होगा। एक शहद ऐसा होगा जो 1,000 रुपए किलो होगा, एक शहद ऐसा होगा जो 2,000 रुपए किलो होगा, 3,000 रुपए किलो होगा। क्या बात है, वाई वाई दिस सच अ बिग डिफरेंस ऑफ प्राइस? बताइए क्या बात हो सकती है? So quality. ओके, गुड। व्हाट एल्स? ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है। सर जो बीज थी उनको कौन से फ्लावर्स दिए गए थे? ओके, गुड, very good. You're talking about quality, you're talking about the kind of flowers, the location where the apiary is located, है ना। डिफरेंट फ्लावर्स का हनी होगा, उसका डिफरेंट टेस्ट होगा, डिफरेंट लोकेशंस का हनी होगा, उसका डिफरेंट टेस्ट होगा। और जो हम ये 100 150 रुपए किलो वाला शहद बात करते हैं, वो शहद नहीं होता है, वो चाशनी होती है चीनी की। हर आदमी जानता है, लेकिन जब आदमी होता है भाई जैम ना सही शहद सही, लेकिन वो शहद नहीं होता, उसमें सिर्फ चीनी का सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। बहुत सी कंपनीज हैं वो अपने इस तरह के शहद में इंक्लूडिंग डाबर एंटीबायोटिक्स डाल रहे थे, वो मिला रहे थे उसमें। ऑफ लेट लोगों में ये थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस आई है। बट वेरी ट्रू, दैट व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल कि एक शहद 150 रुपए किलो है, एक शहद जो है 1,000 रुपए किलो है और 2,000 रुपए किलो है, इसलिए क्योंकि जो इतना सस्ता है वो शहद नहीं है, वो कुछ ना कुछ एक क्या मिलावट की चीज है। और वो इस तरह के लोगों के लिए, बेचारों के लिए पेश किया जाता है जिन्हें पता ही नहीं है। वो उनको शहद चाहिए तो उन्होंने कहा ये ले लो आप, 150 रुपए किलो वाला है, बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा है। दुकान वाला कहता है मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप फिक्र मत करें, बहुत अच्छा है, तो लोग ले लेते हैं। बट यस, if you have to buy quality, if you have to buy good health or healthy products, maybe you will have to pay more, चाहे वो दूध के मामले में हो, किसी भी चीज के मामले में हो। So obviously you need to pay something more over and above what others are paying. So actually over the years
there is a realization both on the part of the marketers as well as on the consumers. There is a kind of an awakening. There's a kind of growing awareness about health. ग्रोइंग अवेयरनेस अब इसलिए है क्योंकि सेहत खराब होने लगी. सेहत ठीक चल रही होती शुरू से तो कोई बात नहीं थी. किसी आदमी को ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ ना हो, वो अपना खाता पीता रहेगा, उसे कोई ज़रूरत ही नहीं. लोग कहे भाई आप ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं? कह रहे मुझे क्या पता भाई, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, एकदम ठीक हूँ. या कोई किसी से कोई आदमी बढ़िया खाने पीने वाला सेहतमंद पहलवानी करता हो, एक्सरसाइज करता हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, उससे कहा भाई डायबिटीज़ के बारे में जानते हो? क्या भाई सुना तो है लेकिन मुझे क्या पता, मैं तो भैया बहुत रोज सुबह 5-6 किलोमीटर दौड़ता हूँ, उसका जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो आधा किलो तो जलेबी खा लेता हूँ रोजाना, कोई बात नहीं है ना. लेकिन कोई आदमी डायबिटिक है तो उससे पूछो, वो उसने काफ़ी किताबें पढ़ ली होती हैं, इंटरनेट पे इतना मटेरियल है वो भी पढ़ लेता है, और उससे कहो जलेबी खाओगे, वो कहे भाई एक एक छोटे से पतला सा आधा टुकड़ा दे दो अगर बहुत दिल किया, और या तो मना कर देगा. तो ये ग्रोइंग अवेयरनेस जो हेल्थ के बारे में, वो भी इसलिए क्योंकि हेल्थ खराब होने लगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द मासेस. एनवायरनमेंट खराब होने लगा, पॉल्यूशन बढ़ने लगा. गाड़ियां तो हैं लेकिन फिर पॉल्यूशन भी है. अच्छे से अच्छी अच्छी गाड़ी लीजिए, अब अच्छे से अच्छे फ्यूल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, हाइब्रिड व्हीकल्स की बात हो रही है. बिकॉज ऑन वन हैंड द पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग. सेकेंडली जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उन सबसे पॉल्यूशन होता है. सो दैट इज वाई with the expansion of the industry, with the expansion of consumerism, there is a kind of a pressure on the environment. There's a pressure on the consumers, which is adversely affecting them. And where I mean, it is we all are a part of the system. We just cannot kind of pull us out of it कि हम कहें हम जो इससे हट जाते हैं, हम तो इसमें रहेंगे ही नहीं. आज की तारीख में किसी से मैं कहूँ कि आप जो है अपना मोबाइल सिस्टम सिस्टम बंद कर दिए, छोड़ दीजिए, फोन छोड़ दीजिए, तो मुझसे कहेगा कि आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बातें मैंने किसी की सुनी नहीं. एक वक्त को मैं खाना छोड़ सकता हूँ, रात की नींद तो मैंने छोड़ ही रखी है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकता. किसी की जेब में से 1,000 रुपये 10,000 रुपये गिर जाए कोई उसको गम नहीं, लेकिन उसका मोबाइल गिर गया तो उसकी नींद उड़ जाती है, इसलिए कि उसमें इतना डेटा है, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसकी पिक्चर्स हैं, पूरा बिजनेस है. बाज़ लोगों का तो बिजनेस जो है उसके मोबाइल पे है. कितने कितने इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सारी कंसल्टिंग टेलीफोन से है, उनकी ड्राइंग्स, उनकी सारी चीज़ें, आर्किटेक्ट्स हैं, सब फोन पर है. सो एक्चुअली वी आर ग्रेजुअली बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ आवर ओन लाइफस्टाइल. आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मॉरल साइंस की क्लास में बैठे हैं आप लोग? नो सर. No, sir. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है. आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं बहुत समझदार हैं, इतना उनको एक्सपोजर हो गया है, स्पेशली द लास्ट 2 years when you know they were not going to school. तो वो अब जो सेल फोन से क्लासेस करने लगे तो वो हर चीज समझ गए. दे हैव गॉट एक्सेस टू एवरीथिंग. And very rightly said Nidal Ahmed that we have become a prisoner of our own device. उल्टी चीज हो गई है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सवारी और सवार का, कि जैसे मोटरसाइकिल सवारी है और आप उसके सवार हैं, तो जब तक सवार जो है सवारी के ऊपर है तब तक अच्छा है. जब सवारी सवार के ऊपर हो जाए तो समझिए एक्सीडेंट हो गया. सिमिलरली जो सेल फोन है, वो जो डिवाइस है, वो हमारी सवारी है, हम उसके सवार हैं.
है ना, वो एक प्रोडक्ट है एंड वी आर द यूजर्स। जब तक हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक सब ठीक है, लेकिन जब वो हमको इस्तेमाल करने लगे, ना दिस इज वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया है। जब हम किसी को कॉल कर रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं, कोई क्या है कि कोई असाइनमेंट है या कोई क्लास है, कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब रात में आपको नींद आ रही है, आपने एक छोटा सा वीडियो शुरू किया देखना, अब आपकी नींद उड़ गई, उससे अगला शुरू किया, आप अल्टीमेटली पता चला रात के 3 और 4 कब बज गए, फिर अब आपको नींद नहीं आ रही है तो अगेन, so ultimately that is when you start getting used by your device. This is where you become a prisoner of your device, right? You're not using it, you are getting used by it, and this is true for all of us. कितनी बार होता है कि अच्छा लेट जाएं, एक लेटते वक्त एक मैसेज देखा, मैसेज देखते देखते सोचा चलो एक कोई फेसबुक पे देख लें, अब उसके रिप्लाई करने लगे, इतने में किसी ने और ज्वाइन कर लिया, किसी दोस्त ने, वो बात शुरू हो गई। अब बातें हमेशा फिजूल होती हैं ज़्यादातर। आप इंडिया में हैं, वो अमेरिका में, उसका दिन शुरू हुआ है, आपकी रात है, उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं, उसने बहुत दिनों में दोस्त मिला है, वो बातें शुरू हो गई। सो दिस इज हाउ वी आर, वी आर काइंड ऑफ caught up in a web. Really, it is very difficult. Everything is being tracked, your purchases, because most of the purchases we are making online or we are using it, your debit card or credit card, सब data generate हो रहा है, it is being analyzed. Your cell phone with you, whatever sites you are visiting, everything is being recorded. आप अपनी कार से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, your movement, we using the fast tag, it is being recorded, जहाँ जहाँ से भी आप गुजर रहे हैं। So actually the true word for all of us is that we are all kind of prisoners to the information technology, and gradually we are getting caught up. The more you try to untangle yourself, and the more you find yourselves into its grips, and perhaps that is the reason why concepts like ethical marketing, green marketing, better marketing for better living, all these things are coming up. अब आप सोचिए, लोग सोचते हैं कि घर में एलेक्सा लगवा लिया, उससे जो है सब काम कर रहे हैं। मतलब एक दो दो तीन छोटे मोटे काम आदमी करता था घर में उठ के, कि स्विच बंद करना है, स्विच खोलना है, पंखा बंद करना है, खोलना है, बाथरूम में जाके गीजर ऑन करना है, वो भी अब एलेक्सा से करा लें आप। तो अल्टीमेटली होना क्या है, बिस्तर पे या सोफे पे पड़े पड़े आदमी जिंदगी गुजार रहा है, तो सेहत तो खराब होनी है। और हाथ में चिप्स हैं, इधर एक कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, 10 चम्मच चीनी उसके अंदर पड़ी हुई है, वो बिकॉज ऑफ द फिज यू डोंट फील इट, बट इट इज सो डेंजरस अ कॉन्कॉक्शन, बट ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस लाइक इट। सॉफ्ट ड्रिंक सबको अच्छी लगती हैं, स्पेशली विद फूड, स्पाइसी फूड, बढ़िया चटपटा खाना खा रहे हो, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक ना तो बेकार है सब। सो we are 9 people, like including me, you're 8 guys। आप एक काम करें, अब आज एक छोटा सा, आई लीव यू हियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफी सेचुरेशन सा हो गया है। ओके, तो अब मैं विद दिस बैकग्राउंड आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट, एंड यू हैव अ होल वीक। छोटा सा असाइनमेंट है, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इस्लामिक मार्केटिंग। What is the concept, what is the need,
and the different elements of Islamic marketing: product, price, promotion, people, distribution. So many things are there. There's a lot of material which is available online. There are books. So you are 16 students in the class. I'll just put it on the group, the details of the assignment. I'm just telling you now. So you can make a group of 4 people each, do your assignment, and make a presentation of any one of the, you know, the elements. Like somebody makes a presentation of the product, so other group will make the presentation for the price. Another group will make the presentation for promotion, right? So I'll just kind of note down. I'll make the groups and put it on your you know on this your WhatsApp group. What I'm thinking is your it will be very good. What what you can do is you can form your groups yourselves also, and but you will have to work it out among yourself that which element of the marketing mix an individual group wants to make. There should be no overlap. That is the idea why uh, you know uh, you can uh, do it on your own. That will be absolutely fine with me. So there's no issue with that. And but you will have to inform me, you know, give me prior information that which group will be making a presentation on which particular element of marketing mix or elements of marketing mix. Okay, so you can do that. Okay, so I leave it to you, and thank you very much for joining. Although we have 2 classes today, but since you are just 8, so I'll not continue beyond this. And next time when we meet, uh, we will continue with our discussion. We'll straight away move to the Islamic retail products. I'll share with you the syllabus uh, which I have. Before we wind up, I'll just quickly show you the syllabus. Is it visible? Not yet. Can you see it now? You can see the syllabus. Yes. Okay, Islamic retail products. So it's basically about the banking products, the home finance, the vehicle finance, and the different models you have. You must have already studied them earlier, but we'll try to apply these models especially to home finance, vehicle finance, personal finance, other Islamic goods finance, and Islamic bank account and credit card. So next time when we meet, we'll continue our discussion, and the assignment that I have given to you, I'll put it on your group. Try to formulate your individual groups and communicate the specific presentation which you want to make. So thank you so much. Thanks for joining. Thank you, sir.